biggest mice shows in the region, in the country, and also we have inbound element. We have 50 roasted buyers from abroad, in addition to hundreds of roasted buyers from corporate and mice travel sectors from all over India. Thank you very much for your presence and your support, especially to all the buyers and sellers, all the dignitaries, all the members of the media. You see, tourism in India fortunately is blooming back after a couple of years of what I call the COVID famine, and then slowly recovering, and then now we are back to a fully vibrant market here in India. So I'm sure you will have a very busy 3 days and make the best of that. You see, we have bigger shows like we ourselves have OTM in Mumbai, and there are many other bigger shows, but this show is special and very close to our heart because this is the only show where we not only are focused on mice, but also we have a lot of innovative features like we will have what we call reverse mixing, where the buyers will sit down, the hosted buyers will sit down, and sellers will go around to meet them. So do catch that moment also. We have circulated the schedule for that, and many other new innovations as you yourself experience. So let's get to the big business. I don't want to take too much time, so back to you, Sharon. Okay, please say a few words to our audience. Thank you very much. Warm welcome, good morning to everyone. On behalf of the Azerbaijan Tourism Board, it's our first time here at BLTM, and I want to give already for a big hands to Fairfest Media and all the team for organizing a tourism exhibition in such an amazing venue. This really brings it up to a new level. Tonight when I was arriving, passport control officer asked me, "You've been here a month ago, why are you coming so often?" And I realized that question I didn't expect at 3 a.m. in the morning, but I can tell you because business is really very well between India and Azerbaijan. We've almost tripled numbers of travelers from India to Azerbaijan, also due to excellent flight connectivity with 11 flights a week from Mumbai from Delhi to Baku, and 3 flights per week from Mumbai to Baku. We hope on a better connectivity in the future also with the regions, and this is reason enough to present Azerbaijan and its many opportunities with regards to business events, weddings, Bollywood, Hollywood opportunities all over India, and we're happy to be back, and great to have BLTM as a new part in our portfolio, and good luck to all of you for the next few days. And again, thank you to Fairfest Media team for bringing this show to such a new level. Thank you. Manager of the Sri Lanka Convention Bureau to please deliver his remarks. Sri Lanka Convention Bureau has been with us since the inception, so kindly address the audience. Thank you. Namaste, good morning. Mark because observed, Sri Lanka tourism, along with 22 million smiling faces, brings warm greetings from our beautiful home, Sri Lanka. I go on, may you live long. First, let me thank Fairfest Media Chairman, Mr. Sanjeev Agrawal, and their organizing committee for extending an invitation for Sri Lanka Convention Bureau. And I must say a big thank you to my friend Harsh for his continuous, unwavering assistance to my entire team and welcoming us to City of Delhi. This year, we have over 30 member delegation and wish to invite each and every one of you to visit us. As all of you are aware, we are surrounded by the Indian Ocean, and we provide endless activities whether you wish to go, wish to above the water or under the water, we are ready. We are the home for the Ramayana Trail. We are blessed with the only temple dedicated to Ashok Nittika Sita. When you travel to my country, you will never miss your cuisines, and you will discover authentic dishes as well.
January to first week of August, total Indian visitors surpassed 230,000. Sri Lanka is a compact, authentic, and diverse destination. I invite each and every one of you to visit our Sri Lankan pavilion. Please join us to experience the Sri Lankan hospitality. Thank you and wish each and every one your instant BLT. नमस्ते, मेरा नाम संजीव अग्रवाल जो कि फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड का मैं संस्थापक हूँ, जो ये पर्यटन की प्रदर्शनियाँ सारे भारतवर्ष में पिछले 35 सालों से हम ऑर्गेनाइज करते आए हैं। दिल्ली में हम ये प्रदर्शनी जो करते हैं इसका नाम है BLTM, इसको कहते हैं बिजनेस लेजर ट्रैवल एंड माइस का मतलब होता है जो मीटिंग, इंसेंटिव और कन्वेंशन और इवेंट्स। ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है ट्रैवल का, जिसमें कि ग्रुप्स ट्रैवल करते हैं। मान लीजिए कोई किसी को मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है किसी संस्था को, या किसी को अपने डीलर को इंसेंटिव देना है, तो वो सैकड़ों की संख्या में वो किसी डेस्टिनेशन में ले जाके उनको इंटरटेन करते हैं। या कन्वेंशन, आप जानते हैं कि कोई एग्जीबिशंस, कन्वेंशंस इस टाइप की, या इवेंट्स जो शादी के इवेंट होते हैं उसमें एक साथ 200-300 कमरे लेते हैं और काफ़ी स्पेंड करते हैं। तो ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को प्रमोट करने के लिए BLTM होता है, जिसमें कि हम होस्टेड बायर लाते हैं सारे भारतवर्ष से और विदेशों से भी। ये बायर जनरली कॉर्पोरेट सेक्टर के होते हैं, जिनको 1-2 कमरे नहीं, उनको 50 या सैकड़ों कमरे चाहिए। और इसलिए आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। पहले ये प्रदर्शनी हम पिछले 7-8 वर्षों से एक होटल के बैंक्वेट में करते थे, और अब ये इतना बढ़िया एक कन्वेंशन सेंटर के एक हॉल में हम इसको ले आए हैं। तो ये दुगना, पिछले साल से दुगना ऑलरेडी हो चुका है, और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये बहुत अच्छा अगले 3 दिनों में हम न सिर्फ हमारे होस्टेड बायर बट दिल्ली NCR के हजारों जो ट्रैवल ट्रेड के जो बायर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे और वो इंटरेक्ट करेंगे जो सेलर्स से। और अगले सालों में हम देखते हैं कि ये भारतवर्ष का और इस पूरे रीजन का, पूरे एशिया में एक बहुत बड़ा माइस का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने की इसकी संभावना है। और हम हमारी जो पर्यटन मंत्री अभी इनॉग्रेशन में नहीं आ पाए क्योंकि वो दूसरी जगह में, लेकिन वो जो क्लोजिंग सेरेमनी में आ रहे हैं, इस फेयर में हम ये माइस के अलावा रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म यानी जिम्मेदारी के साथ टूरिज़्म। कहीं भी आप जा रहे हो, वहाँ लोकल कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा हो, वहाँ की लोकल स्टाफ का सबसे ज़्यादा कैसे एम्प्लॉयमेंट हो, वहाँ की चीज़ों को हम कैसे लोकल हैंडीक्राफ्ट को खरीदें, लोकल फूड को टेस्ट करें। तो इसको लेके भी हमारी बहुत अच्छी यहाँ पर एक अवार्ड सेरेमनी होने वाली है 31 तारीख को, जो कि इसका अंतिम दिन है प्रदर्शनी का, जिसमें माननीय जो हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर शेखावत साहब वो आएंगे और वो अवार्ड देंगे। जो हमारी एक ICRT इंडियन सोसाइटी फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म है, वो ये अवार्ड को डिसाइड करती है। तो ये भी बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी साइड में चलेगी कि भी हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को कैसे प्रमोट करेंगे। और इसके अलावा हम बहुत सी नई चीज़ें कर रहे हैं, जैसे हमने एक तराई सर्किट एक आइडेंटिफाई किया है कि अभी जैसे अयोध्या में अब नया बहुत लोग, काफ़ी टूरिस्ट जा रहे हैं वहाँ पर मंदिर बनने के बाद, तो वो कैसे और उसको अपनी लेंथ को बढ़ाएं, अपनी जो ट्रिप है उसमें वो अगर ईस्ट की तरफ जाएं, पूर्व की तरफ जाएं, तो वो हिमालय की तराई में बहुत ऐसे अच्छे जो क्षेत्र हैं, मंदिर हैं और बहुत अच्छे वन हैं वहाँ पर। तो इसमें आप अगर अयोध्या से लेकर, मैं खुद वो ट्रिप लिया था अभी रिसेंटली, और हम वो प्रमोट करना चाहते हैं कि आप सिर्फ अयोध्या में ही अपने टूर ख़त्म ना करें, आप वहाँ से आप नेपाल जा सकते हैं बॉर्डर के पास, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। आप सीतामढ़ी जा सकते हैं, सीता के जो टेम्पल है वहाँ जा सकते हैं, जनकपुरी नेपाल में जा सकते हैं, वाल्मीकि आश्रम जो बिहार में है, वाल्मीकि नगर, जहाँ की लव कुश पड़े हुए थे और सीता ने जो उसमें ज़मीन में अपना जो वो अंतर्धान हुई थी, उसका एक टेम्पल है। तो इससे सभी राज्यों को फ़ायदा मिलेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, और ये एक सर्किट सा बन जाएगा। और उसमें बुद्ध धर्म के भी बहुत से अट्रैक्शन हैं, तो ऐसा हम ये सब भी प्रमोट करने की कोशिश करें। तो ये एक प्लेटफॉर्म, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सब इकट्ठे आते हैं। अभी देखिए, टूरिज़्म तो वर्चुअल नहीं हो सकता, रियल ही हो सकता है। तो इसकी प्रमोशन भी हम ये मानते हैं कि रियल में जब हम एक दूसरे के सामने बैठते हैं तो उसका कोई विकल्प नहीं है। ऑनलाइन आप कितना भी कर लो, आमने सामने फेस टू फेस इंटरेक्शन की को प्रमोट करने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया। सर, कितने नए बायर्स, इंटरनेशनल बायर्स इससे जुड़े हुए हैं? इसमें पहली बार हम
50 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल बायर को हमने होस्ट किया है, मतलब हम उनका खर्चा दे रहे हैं। हम एक प्राइवेट संस्था है लेकिन फिर भी हम खर्चा दे रहे हैं उनकी फ़्लाइट का और रहने का। और इसके अलावा हमारे कम से कम 300 से ज़्यादा जो डोमेस्टिक कॉर्पोरेट सेक्टर के बायर हैं जिनको हम उनके किराया देके और उनकी होटल हम खर्चा उठा रहे हैं ताकि यहाँ के जो सेलर हैं इनको एक अच्छा बिजनेस मिल सके। बट इसके अलावा अपने आप भी हज़ारों लोग इसमें प्रदर्शनी में आएंगे जो B2B जो इस उद्योग से पर्यटन उद्योग से कोई नाता रखते हैं तो उनको हम फ्री एंट्री देंगे। थैंक यू सर। And I would like to recognize His Excellency Mr. Selhamur, the Under Secretary of State for representing Cambodia here in BATM 2024. Now, the Ministry of Tourism of India has extended its full support to BATM 2024, and we are incredibly grateful for that. I would like to recognize Mr. R.K. Still, Director North, India Tourism. Thank you, sir. Now, I would like to invite Mrs. Anjali Yadav, IAS, Director of Jharkhand Tourism, to kindly say a few words. Ladies and gentlemen, it's a great opportunity for Jharkhand Tourism to be present here. We are making our mark in all the national prestigious event. BATM gives us a very good platform to engage with all the stakeholders who are here. Jharkhand Tourism is now coming up with a lot of new policies, providing fiscal incentives to different stakeholders, whether it is hotel chains, whether these are other tour operators who are there. We are trying to collaborate with different associations to have local chapters in Jharkhand so that we have more stakeholders who are actively engaging with the government. Jharkhand Tourism is coming up with many destinations for the destination wedding purposes. We are also engaged Deloitte as our transaction advisor to engage the properties through PPP mode. So we are happy for the hotel chains who are there, who want to invest in our state. We are also happy to collaborate with all the associations who want to enter and at least explore the eastern part of India. So one unexplored destination, beautiful infrastructure. When we talk about wildlife, when we talk about adventure tourism, beautiful waterfalls. So I think many of you have heard of Jharkhand, but when we talk about you visiting Jharkhand, so we are still yet to welcome you there, and we are really hoping that it will provide a great experience to you because people are very hospitable. The tribal way of life is something to really look forward to. We have Sarhul Festival which is coming up now. We are trying to engage everyone to participate in Sarhul Festival, which shows the tribal way of life. Our local cuisines also there. So we welcome you all to Jharkhand, and we are hoping to collaborate you in different forms. Thank you so much. First of all, I would like to welcome all the international delegates to Incredible India. I think the BATM is going to do better this year because the venue is marvelous. This is a very new venue created by government, and I think we are going to take the leverage of this venue. And of course, the international buyer and the domestic buyer, all the sailors. I think we have got a good number of participants here, and that is going to give a good business opportunity. Thank you. A very good morning. Thank you to BATM and the team for your hard work putting together these gatherings. You guys are amazing. We feel very welcome here. And on behalf of the Ministry of Tourism of Cambodia, we want to invite you all to come to visit us. You know for what? In your lifetime, you should not miss it. We have amazing destination. We have many things to do, many things to see. Yet not so many information out there. That's why we are here. And our booth is right here at D500 and come and see us. And then we have a handful of private sectors coming here as also. And thank you so much for having us here, and we're looking forward to come to see you again next year. Thank you. Of India to kindly address. Thank you so much. Good morning to everyone. It's such a pleasure to see numbers here despite the challenges what God gives us in the form of weather. But it's awesome, and I'd like to congratulate everyone, Mr. Agarwal, everyone in the team, especially who worked very hard to put this forward. Only thing which I'd like to add on from all the speakers which I've heard speak from all different countries and our own and India, I think India is a plethora of opportunities, and so are other countries, and that's the reason these opportunity comes on the ground here to actually support tourism more.
And what I would like to emphatically say that tourism is the only thing that drives peace and prosperity. So we all just need to work together to say that we are in this institution of travel and tourism, because we have everything going in this world globally, and I think those are the opportunities each one of us should look into to grow tourism, because tourism is all about people to people connect, and tourism is all about giving experiences to our customers. I think that is what we need to emphasize on and say, yes, let's build this world beautifully and let's pave the path of tourism and going forward. Thank you so much.